Welcome once again in online class. I hope all of you are well and good at your home. From earlier classes, we are familiar with periodic table. In periodic table, elements are categorized as S block elements, P block elements, D block elements and F block elements. And in earlier class 11 we studied group 13 and group 14 elements, and today we are going to discuss group unit 7, the P block elements. As we know that the P block elements are placed in groups 13 to 18 in the periodic table. Okay, so group 13 to group 18 में जितने भी elements होंगे वे P block elements कहलाएंगे, and it has valence cell electronic configuration ns2 np126. Okay, so जितने भी P block elements हैं उनका valence cell electronic configuration होता है ns2 np126 except helium, because helium has 1s2 electronic configuration. Okay, so इसका क्या है 1s2 electronic configuration है, जिसकी वजह से ये exception case है in the P block elements. Now the properties of P block elements is as different elements is greatly influenced by atomic size, ionization enthalpy, electronegativity and so many other factors. Okay, so जितने भी P block elements हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, like other elements influence होती है by atomic size, ionization enthalpy, electronegativity and other factor की वजह से. As in the second period of P block elements there is a absence of d orbitals. Okay, so second period में क्या होती है, absence होती है of d orbital की, and onwards third period से क्या होता है, presence होती है, presence of d and f orbitals. या तो d ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंस होता है या तो d और f दोनों ही उसमें क्या होती हैं, प्रेजेंस होती है थर्ड पीरियड से. और इन द सेकंड पीरियड देयर इज एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन p ब्लॉक एलिमेंट्स, सो इट गिव्स आल्सो अ डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज ऑफ p ब्लॉक एलिमेंट्स. तो इसकी वजह से भी क्या होता है, p ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है. Okay, now in addition the presence of all types of elements, all three types of elements जो P block elements हैं उसमें all three types of elements, metals, non-metals and metalloids are also present. जो P block elements हैं उसमें metals भी present हैं, metalloids भी हैं और non-metals भी हैं. So it brings also a diversification in chemistry of these elements. तो इससे भी क्या होता है, diversification होता है in chemistry of these elements. Okay. Now starting from group 15 elements. Group 15 elements include nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. These are their respective symbols, and a short trick for memorizing group 15 elements is नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ेंगे. Okay, so this is a short trick for memorizing group 15 elements. नहीं प्यारे ऐसे सब बिगड़ेंगे. Okay, so in group 15 elements nitrogen and phosphorus are non-metals, arsenic and antimony are metalloids, while bismuth is a typical metal. So there is presence of all three types of elements, metals, non-metals and metalloids, which brings a diversification in chemistry of these elements. Okay, now moving on its occurrence. Okay, we discuss occurrence one by one. Then for nitrogen, molecular nitrogen comprises 78% by volume of atmosphere. As we know that nitrogen gas, percentage of nitrogen gas in atmosphere is 78%. And in the earth crust, nitrogen occurs as sodium nitrate NaN3, which is also known as Chile saltpeter, and potassium nitrate, potassium
nitrate, which is also known as Indian saltpeter. Saltpeter. Okay. So nitrogen exists in earth crust as sodium nitrate, which is known as Chile saltpeter, and as potassium nitrate, which is known as Indian saltpeter. And it is found present in animal and plants, animal and plants. So animals और plants में ये present होता है. Now moving on, phosphorus. Phosphorus occurs as phosphoproteins in animals and plants, and phosphorus is present in bones as well as cell fluids. So phosphorus जो है वो bones में भी होता है as well as cell fluids में होता है अगर phosphorus की बात करें. And phosphorus is also occurs in some exist as a phosphoproteins, and phosphoproteins is present in milk and eggs. ओके, सो फॉस्फोरस की प्रेजेंस होती है मिल्क और एग में होती है. वो फॉस्फोरस जो है वो बोन्स में भी होता है, सेल फ्लूइड्स में होता है. एंड अगर आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की अकरेंस की बात करें, देन दीज आर अकर्स इन सल्फाइड मिनरल्स. ओके, तो सल्फाइड मिनरल्स में आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की अकरेंस होती है. ओके, नाउ मूविंग ऑन द एटॉमिक नंबर. ये तो अकरेंस की बात हो गई. देन मूविंग ऑन देयर रेस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर्स. देन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7 for nitrogen. For phosphorus this is 15, and arsenic is 33, as antimony is 51, and bismuth is 83. Okay, so this is the respective atomic number of nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. Then moving on, electronic configuration. Okay, so electronic configuration की बात करें, as we know that the p block elements, the valence shell electronic configuration for p block elements is ns2np126. and अगर नाइट्रोजन की बात करें तो इसका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 2s2 2p3. ओके, फॉर नाइट्रोजन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड फॉर फॉस्फोरस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3s2 4p3, and for arsenic the valence shell electronic configuration is 3d10 4s2 4p3, and for antimony valence shell electronic configuration is 4d10 5s2 5p3, and for bismuth this is 5d10 6x2 and 6p3. Okay, so these are the electronic configuration of nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. And this is the electronic valence shell electronic configuration mainly है जो lie करता है in between ns2 np6 में. Okay, now as from this electronic configuration we get that s orbital is filled, is completely filled, and p orbital is half filled, and this half filled p orbital is responsible for their extra stability. Okay, so p orbital क्या है, exactly half filled है. As we know that maximum number of electrons in p orbital is 6 and there is 3, so this half filled p orbital is responsible for extra stability of p block elements of group 15. ओके, सो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स का जो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए. ओके, देन मूविंग ऑन, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. ये हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की बात करें, फ्रॉम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई साइज इंक्रीजेस फ्रॉम गोइंग डाउन टू द ग्रुप. ओके, तो अगर इंक्रीज करने की बात करें, इनका जो एटॉमिक और आयनिक रेडिया है इंक्रीज करता है ऑन गोइंग डाउन टू ग्रुप. ओके, दैट मीन्स नाइट्रोजन हैज स्मॉलर एटॉमिक रेडिया और आयनिक रेडिया देन फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, देन एंटीमनी एंड देन
बिस्मथ। ओके, सो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या करता है, इंक्रीज करता है ऑन गोइंग डाउन टू दी ग्रुप। वो ग्रुप में अगर हम गोइंग डाउन करेंगे, उसमें नीचे को जाएंगे पीरियड्स में, तो उनमें क्या होगा, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई होगा वो क्या होगा, कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ फास्फोरस, एंड फास्फोरस का एटॉमिक और आयनिक रेडियाई कम होगा इन कंपैरिजन ऑफ आर्सेनिक, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या होता है विद इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज, बिकॉज एटॉमिक साइज में भी क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि हैवियर एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, तो उनमें भी क्या होगा, उनमें एटॉमिक साइज क्या होगा, वो कंटिन्यूअसली क्या होता रहेगा, यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा। तो एटॉमिक और आयनिक रेडिया की बात करें, वो इंक्रीज होगा ऑन गोइंग डाउन टू दी ग्रुप। ओके, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, डिक्रीज होती है ऑन गोइंग डाउन टू दी ग्रुप, वो डिक्रीज होती है विद द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, एटॉमिक साइज में इंक्रीज होगा, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो क्या होगी, विद ग्रेजुअल इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज इट डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन टू दी ग्रुप। सो अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, सो फॉर नाइट्रोजन हैज मैक्सिमम आयनाइजेशन एंथैल्पी देन बिस्मथ। ओके, बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है इन एटॉमिक साइज में। Then electronegativity is also decreases on going down to the group, and this is same as ionization enthalpy, Sb, and last one is bismuth. Okay, so इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बिस्मथ बिकॉज ऑफ ग्रेजुअल इंक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी के जैसा ही इफेक्ट पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे इफेक्ट पड़ेगा। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आल्सो डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन टू द ग्रुप, एंड these are the occurrence, atomic number, electronic configuration, atomic and ionic radii, ionization enthalpy and electronegativity of group 15 elements. Okay, moving on to physical properties of group 15 elements including nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. The first one physical property is all these elements are polyatomic. Polyatomic, dinitrogen N2 is a diatomic and it is in the gaseous form. Okay, so अगर physical state की बात करें, so नाइट्रोजन जो है डाइनाइट्रोजन है, डायएटॉमिक गैस है और वो क्या है, गैसियस फॉर्म में है, और जो अदर्स एलिमेंट होंगे वो क्या रहते हैं, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं। अगर अदर एलिमेंट की बात करें, वो फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी और बिस्मथ है, वो सॉलिड स्टेट में रहते हैं। ओके, देन मूविंग ऑन द मेटालिक कैरेक्टर, अगर मेटालिक कैरेक्टर की बात करें, देन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस on going down to the group. Okay, so from nitrogen to bismuth जो metallic character है वो क्या होता है, increase होता है, as we know that nitrogen and phosphorus are non-metals, arsenic and antimony are metalloids and bismuth is a typical metal. Okay, so metallic character increases on going down to the group. Okay, now moving on the melting point. Melting point is also increases on down to the group, or we can say top to bottom. ओके, सो टॉप टू बॉटम क्या होगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता रहता है, नाइट्रोजन टू फास्फोरस, फास्फोरस टू आर्सेनिक, आर्सेनिक टू एंटीमनी एंड देन बिस्मथ। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इनका इंक्रीज होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बॉइलिंग पॉइंट इसमें इंटरेस्टिंग है बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है अप टू, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक increases up to arsenic and then decreases up to bismuth. Okay, so boiling point पहले increase करेगा up to arsenic, then decrease करेगा up to bismuth.
Then last one physical property is that all these elements form allotropes except nitrogen. Okay, so except nitrogen, other elements like phosphorus, arsenic, antimony and bismuth form allotrope. Okay, so this is the physical property of group 15 elements, such as these are polyatomic and their metallic character increases from going down to the group, and the melting point is increasing on going down or to the group or top to bottom, and the boiling point increases up to arsenic and then decreases up to bismuth, and all these elements except nitrogen forms their allotropes. Okay, so that's all for today. I will meet you in my next video. Thank you.